jungle, zameen. 3 words that have defined Bastar for decades. 3 words that represented an ideology which claimed that locals will get right over the resources of these forests, but which translated into denying them right to political participation, right to development. This election season, how are the locals of Narayanpur, Jagdalpur, Dantewada, Sukma, Bastar, Bijapur reacting to the security first approach? We are here to get you voices of people who perhaps will vote for the first time in their life. Voices of people who have never seen electricity or schools. Voices you may not have ever heard before. A new dawn has been promised to the people of Chhattisgarh. Morning chatter of students as they go to school. The sound of ambulances and not charpais ferrying mothers in labour to the nearest health centre. The reality of development and security. 65 new security camps have been opened in the last 4 years throughout Bastar. Camps which promise freedom from Naxal terror. One such forward operating base is Dakon Camp, about 120 kilometers from Sukma. This CRPF camp is in the heart of a territory which till last year was used by the Naxal military arm, People's Liberation Guerrilla Army, for regular trainings. The Dakon camp has been set up on the Bheji axis. This is the last camp which takes you towards Bheji. Beyond this is Chinta Gufa, 20 kilometers away. Why is this camp significant? Because this is an area which was like the Garh, like the center of the CPI Maoist movement when they moved from Odisha towards Bijapur in Chhattisgarh, towards Sukma, and also onwards to Gadchiroli. This area was one of the key points for them, and this is now completely secured. You can see, to keep an eye even in the sky, there are Netra drones that have been deployed just to scout the surrounding jungles here. It's a heavily forested area. When operations are launched even now, these drones and also mini drones are like the eye that the CRPF keeps in the sky. To launch an operation, they need to know if there is any Naxal presence anywhere close by. How does having a camp in Dabbakonta really help? What does it mean for anti-Naxal operation? Ma'am, as you know, right now we are standing here in Dabbakonta. That is the last forward operating base of 50 battalion. Earlier that was extended from Injiram to Bheji, and now we have extended from Bheji to, we are almost close to Bheji to Chinta Gufa through Pidmail. So the movement of the Naxals from east to west has stopped because of our presence, and that is very significant for us. Because of that and because of the connectivity, road connectivity and other facilities, people are coming in mainstreams. So that is very demotivating factor for the Naxals. When government gave you this mandate of setting up a forward operating base here, what was the kind of challenges that you faced? Heavily armed Naxal groups were here, and we faced around 7-8 times attacks from the Naxals also. But we countered all the time, and we successfully established this camp. What is this place? I mean, I can see some damaged culvert-like structure. This is a crucial road for Naxals. What really happened? Actually, ma'am, this road connects two important places like Injiram and Chinta Gufa. And this used to be a motorable road around 30-40 years back. So Naxals, what they did, they blasted all the culverts and bridges of this road, and they made it non-motorable. And because of their dominance, their presence, for last around 30-40 years, there is no vehicular movement in this area. So we are
trying to establish this vehicular movement by constructing these culverts and roads, whatever have been damaged by the Naxals. So I can see there are pipes lying around. I mean, so the blast was so impactful that the pipe got thrown all the way down there? Yeah, you will find this type of damage throughout the whole road from this place to Chintagufa. On 3 different axes, Dornapal to Jagadgunda, Injaram to Bheji and Kishtaram to Palori, camps followed by road construction and mobile tower installation has cut off free movement of Naxal cadre. Initially, when we opened up the security camps, Naxals, they felt like a lot of inconvenience because their corridor is getting blocked, their safe passage is getting blocked, their supply network is getting affected. So because of all these Naxals, they tried to instigate the villages who are earlier in their stronghold areas to come and protest against the security camps. But when the villages, they came and see how we function, what are the benefits of the security camps, how they are getting benefited from the security camps, then the villages, they are getting convinced with our approach, and slowly the protest, they died down. These are all areas where CRPF and state police have lost hundreds of men in direct encounters with Naxals or in IED explosions which have blasted the forces off into pieces. There is intelligence that there could be an IED somewhere around this road. This is a blacktop road, so the IED could be in a foxhole on the sides of the road. That strategy has been adopted by Naxals earlier also. So what you see is, deep, metal detectors there trying to look for where, okay, there's the signal. There seems to be some beeping that suggests that there could be some kind of an explosive which is there. I think the canine squad is coming in next. The rest of the party here has just taken shelter so that the impact of the explosion is not felt by them. The canine squad is now being pressed into service. Let's see if we detect something. Yes, the canine sits down, which means there is confirmation that there could be some explosive here. Next up, the bomb detection squad, the BDS, will get into action, and we'll just step back because they need to really, the BDS needs time and space. So I'll request Vijay Ravinder to just come back, Ravinder, so that the BDS can do its work. The IED has been detected that they have carried out checks for secondary IEDs as well, which basically means okay, now there is announcement that the main IED is also being detected and it is being blasted off. You can hear the whistle there. Any moment now, that IED which was detected will be triggered off. And let's just pause. So those are warning sounds that we hear before the IED is triggered, and even the canine squad, you can hear the barks there. The IED is being triggered off in the last couple of weeks. That was the IED which has just been exploded by the CRPF team which had detected the IED. They carried out checks for the secondary IED as well. The canine squad was put in place, and finally that explosive device has been set off. So this was a kind of situation which the paramilitary forces here in Chhattisgarh, in Sukma, Bijapur, Dantewada, Bastar, they face every third day, every fourth day, because IEDs are the favorite weapons of CPI Maoists, and roads are often their favorite targets. CPI Maoist cadre blasting off roads, culverts, bridges has meant that for decades, some pockets of Bastar have been non-existent on the government map. Dakon village is one such pocket. The villagers have never voted, children have never gone to school, and the nearest medical facility is 60 kilometers away and has to be accessed by charpais carried by villagers. वोट देते हैं आप लोग? आपने वोट दिया है कभी? हाँ? नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कभी वोट नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? नहीं दिया, आप तो इतना उम्र हो गया, वोट का नाम क्यों नहीं जानते? कितनी उम्र है आपकी? क्या मालूम, आप तो अनपढ़ आदमी, क्या करूँगा? अच्छा, आप में से किसी ने वोट दिया है? कभी वोट दिया है? कभी किसी ने वोट नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? नहीं जानते वोट डालने वाले। क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते?
वोट डालने के नहीं जानते, अपना इतना उम्र हो नहीं गया। तो आपके गांव में वोटिंग बूथ नहीं बनता क्या? पहले तो आए ले डोकरा हमारा पापा लोगों को डाल दिया। हाँ। हम तो शादीशुदा हो गया, अब तक नहीं लगाया। यहाँ पे कभी वोटिंग का नहीं लगा है? नहीं लगाया, इतना उम्र हो गया, अब नहीं डाला है। अच्छा, तो अब जब यहाँ पे कैंप खुल गया है, अब तो सड़क बन गई है, तो आपको उम्मीद है कि आप भी कभी वोट दे पाएंगे? कोई आएगा, आपको लगता है ऐसा होगा? जी अभी दे पाएंगे मैडम। आपको लगता है ऐसा? जी। हाँ। आपको कुछ मालूम है वोट देने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? दोनों तरफ डर देगा दीदी। हाँ? दोनों तरफ डरने वाला है, क्या करूँगा? क्यों किस बात का डर? वोट देंगे तो भी डरने की बात है? नहीं तो पहले वैसे हो रहा था, अभी तो छुदा हो गया। हाँ। अभी तो नियम हो पहले गया। क्या आकर बोलते थे? वही नक्सली डराता है ना। क्या बोलते थे? वो वोट नहीं डालना है बोल रहे थे। अच्छा, जैसे इनका बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, कितना उम्र होगा इसका? इसका तो 7-8 महीने का। कहाँ, घर पे ही पैदा हुआ है? घर में ही। घर पे पैदा। उनसे पूछिए, जब बच्चे को जन्म दे रही थी तो लगा कि कोई डॉक्टर होता तो जरूरत होती, या इसी की आदत है? पूछिए जरा। तो मतलब सिर्फ डाल सकते रहे बालिंजा डॉक्टर लोगों को रहने से थोड़ा सा ठीक होता है। ठीक होता है। Education has definitely made its inroad in Naxal territory, erstwhile Naxal territory. These are villages where Naxals were not in favor of government machinery reaching, but you can see even from temporary structures like this, education is making a comeback. So far, the children were often taken to ashrams, which were outside on the main state highways or the main roads, and they were like boarding schools. But now students are getting a chance to get some basic education even when they are living in their villages. Yes, this may not be a perfect idea of a school building. You can see it's hardly any protection from rain, it's hardly any protection from heat. There's a tin roof, and even in the month of October, November, when the rest of India would see temperatures going down, this particular area is extremely hot and humid. 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैडम मेरे को बहुत दिक्कत है मैडम, डैशबोर्ड नहीं है मेरे स्कूल का, जो पोर्टल में नाम नहीं है मैडम, सीजी शिक्षा एंट्री नहीं है मैडम मेरे बच्चों का भी, और मेरे को मध्याह्न भोजन और जो सवेरे का नाश्ता है, ब्लैक बोर्ड है, चाक वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा है आप जो अपने संस्था से शिक्षा विभाग से मैडम। इसके लिए मैं भी डीओ साहब को मैं एक आवेदन दिया था, तो उन क्या बोले कि हम देखेंगे बाद में ऐसे करके। अच्छा, ये जहाँ पे आप पढ़ाने आ रहे हैं, अभी तो यहाँ नक्सलियों को हटाया गया, तो जब आपसे कहा गया कि आपको यहाँ के स्कूल में पढ़ाने जाना है तो डर लगा था क्या? नहीं मैडम, मैं पहले मेरा पोस्टिंग हुआ मैडम, तो 5 दिन तो मैं आ नहीं पाया, क्योंकि डर के यहाँ कि पहली बार मैं यहाँ पे घुसा हूँ मैडम, कि मैं पहले रोड किनारे में ही पढ़ा रहा था लगभग 13 साल से वहाँ पे, तो ये मेरा फर्स्ट पोस्टिंग है अंदर गाँव में। मेरे को डर भी लगा अंदर वालों से, लेकिन आज तक मेरे किसी प्रकार के नहीं मिले हम लोग। आप आना जाना कैसे करते हैं? मैं बाइक से आना जाना करता हूँ, लगभग आना जाना 90 किलोमीटर पड़ जाता है। Villagers in these parts have made peace with conflict, but the new aspirational generation wants the basic: electricity, health clinics, education. पूरे गांव में एक ही भाई है, वो आपका भाई है जी, और 12वीं 10वीं 12वीं वाले भी है, पढ़ रहे अभी। Gajendra Padami proudly narrates that his brother is the only graduate in the area. It is an achievement because Padami's village, Retampura, on the Dantewada-Sukhma border, has never seen electricity. One has to trek deep inside forest and climb a hillock to reach this tiny hamlet. There are many villages across Bastar and districts of Sukhma, Bijapur, Dantewada, which have never seen electricity. We have trekked up the hillock to reach one such village, which is Retampara. These are villages. आपके यहाँ बिजली है? कब से बिजली का की क्या समस्या है, जरा बताइए। हम लोग क्या बिजली कम से कम अब आज़ाद हुआ तब से हमारे पास बिजली है ही नहीं, ना देखने आया, हम लिख के देते हैं, लेकिन लिखने वाला कहाँ जाता है तो पता नहीं। 75 साल से जब से देश आजाद हुआ आप लोगों ने कभी बिजली नहीं देखी? नहीं। कभी कोई बल्ब जलते हुए नहीं देखा? नहीं देखा मैंने, बिल्कुल नहीं देखा जी। आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा है, कोई स्कूल? क्योंकि स्कूल तो है, पढ़ाई करते हैं बच्चे? करते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं अगर लाइट नहीं है तो? लाइट नहीं तो दिन के
पड़ता है। हाँ। दिन के पड़ता है यहाँ। नक्सलियों का गांव है इसलिए यहाँ पर सरकार नहीं दे रही है, क्या ऐसा हो सकता है? नक्सली तो पहले थे लेकिन अभी तो नहीं है। तो अभी तो गुरुजी आ रहा है, कैंप भी आजू बाजू भी बिठा है। अभी तो कैंप बैठने से हम लोग लिख के दिए, तब पर भी आना चाहिए, रोड आना चाहिए, बिजली आना चाहिए और पीने के लिए बोरिंग नहीं ना कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये मोबाइल है, इसको कैसे चार्ज करते हैं? बिजली तो है नहीं। बिजली नहीं, कुछ नहीं, बैटरी से चार्ज करते। तो एक बैटरी कितने दिन चल जाती है? बरसात समय नहीं चलता है। बरसात के टाइम पे नहीं चलता है। नीचे किसी और गांव में कहीं और से जाके चार्ज करके लाते हैं? जी। अच्छा। After the break, BJP is banking on issues like corruption to unseat the Bhupesh Baghel government. But will it find any resonance among voters? We'll find out. Twelve seats of Bastar and 8 seats around Rajnandgaon go to vote in Phase 1 on the 7th of November, while the remaining 70 seats will vote in Phase 2 on the 17th. Along with security, issues of corruption, appeasement and soft Hindutva have all been rolled out by parties to woo voters. Amidst whirlwind election meetings, incumbent Chief Minister Bhupesh Baghel finds time to pay respect at Bastar's famous Danteshwari temple. The temple has a huge draw amongst the tribals and non-tribals of Chhattisgarh. सर, आप माई का आशीर्वाद ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दिवाली 3 बार मनेगी क्योंकि बीजेपी की जीत होगी, क्या कहेंगे आप? दीपावली तो एक ही बार मनाते हैं और बस्तर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। माई के दरबार में आए हैं, माई की पालकी 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगी और बस्तर का दशहरा मनेगा। और इस समय का जो बस्तर का दशहरा है, 5 साल में जो बस्तर में बदलाव आया है, बस्तर में शिक्षा की बयार भई है, बस्तर में लोगों की आमदनी बढ़ी है, बस्तर में स्वास्थ्य योजनाएं चली है, बस्तर में जो लोहांडी गुड़ा की ज़मीन ये डबल इंजन की सरकार ने निजी हाथों में सौंपा था, उन आदिवासियों को वापस कराए हैं। यही डबल इंजन की सरकार है जो यहाँ के दंतेवाड़ा जो बैलाडीला के जो खदान है उसे अडानी का कोई एमडीओ बनाया था, उसे निरस्त कराया थी। इसकी खुशी मनाएंगे। 2 आरोप उन्होंने आप पर लगाया है। एक लगाया है करप्शन का, उन्होंने महादेव ऐप का भी जिक्र किया और ये भी कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा कि उनकी सरकार ने 1000 करोड़ से ज्यादा दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ 30,000 करोड़ के करीब था। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये वो पूछ रहे हैं। ये केंद्र यदि पैसा देती है तो छत्तीसगढ़ पे एहसान नहीं करती, बल्कि यहाँ से उतना चाहे लोहा के माध्यम से, चाहे कोयला के माध्यम से, बॉक्साइट के माध्यम से ज़्यादा पैसा हम देते हैं केंद्र में। और दुर्भाग्य ये है कि इसको कोयला से प्रेम है। कोयला ढुलाने के लिए ट्रेनें बंद नहीं होती, लोहा ढुलाने के लिए ट्रेनें बंद नहीं होती, है ना, वो आबाद गति से चलता है। यात्री ट्रेन बंद है। आज 400 से अधिक यात्री ट्रेन छत्तीसगढ़ से बंद हुए हैं। ये त्यौहार का सीजन है और ट्रेनें बंद है। उनको उनकी चिंता नहीं, उनकी चिंता केवल अडानी के, उनकी निगाह केवल छत्तीसगढ़ के खदानों पे है। और जहाँ तक के बात पैसा देने के बाद ये लोग लूटने का काम किए हैं। और जो सबसे बड़ा लुटेरा है, जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, उसके वो नामांकन में गए थे राजनांदगांव। महादेव ऐप कितना बड़ा इलेक्शन इशू है, आप ये भी बताएं। जो महादेव ऐप का कल का एपिसोड है, अब तो साफ हो गया कि ईडी ने चालान पेश कर दिया है और ये 500 करोड़ का नहीं, 6000 करोड़ का ईडी का मामला महादेव ऐप का है। और इसके तार सीधे मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हैं। इनके सचिवालय के, इनके सेक्रेटरिएट के अधिकारी सीधा महादेव ऐप पे पैसा लेने का आरोप है और प्रमाणित आरोप उनके ऊपर लगा है। छत्तीसगढ़ में कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसका सीधा तार भूपेश से जुड़ता है। BJP and Congress are hoping to corner maximum seats, but the presence of rebels of parties like BSP and CPI could be the X factor.
आप लोग वोट देते हैं यहाँ से? देते हैं लगातार देते हैं? बिल्कुल लगातार देते तो आपके यहाँ से कौन जीतता है, कमल या हाथ? हाथ जीतता है। हाथ जीतता है। हाँ। और बाकी अभी बाकी बीजेपी नहीं ना सीपीआई नहीं, आपके बार सीपीआई जीतना है। सीपीआई जीतना है? हाँ। क्यों सीपीआई में क्या खास बात लगती है आपको? आपको अपन को सीपीआई अच्छा है। और कोई दिक्कत है जिसके बारे में आप चाहते हैं चुनाव में आपके नेता आपके लिए काम करे? सड़क है आपके पास, स्कूल है, मैं देख रही हूँ गैस सिलेंडर भी आया हुआ है, तो उज्ज्वला योजना भी गैस सिलेंडर अंदर मिल जाता है? मिल जाता है। मिल जाता है। पानी का सुविधा पानी का सुविधा नहीं। तो पानी का क्या करते हैं आप लोग? पंप देखो बोरिंग है, कहीं की नल से पानी नहीं आता है, नल से पानी नहीं आता है कहीं, मतलब अभी बस्ती उस्ती में मिलता है पानी। ऐसा मतलब हम लोग के ऐसी मतलब आदिवासी गांव में वो नल जल बोलते नहीं, वो नहीं है। आपके गांव में ज्यादातर बच्चे पढ़े लिखे हैं? जी है मैडम। हाँ? कुछ अपने दोस्त लोग भी पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। मतलब कहाँ तक, 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, कहाँ तक पढ़े? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े लिखे बैठे हुए हैं मैडम। हाँ। तो नौकरी, सरकारी नौकरी चाहते हैं जो मिल नहीं रही है। सरकारी नौकरी के लिए जाने से वहाँ तो एक पैसे की आवश्यकता लगती है मैडम। वहाँ पैसा तो अपने घर से मिलता नहीं है, जिसके पास पैसा है नौकरी। From interior villages to cities like Raipur, Bhilai, Bilaspur, the issues of employment and development are common amongst voters. कैसा है माहौल है, क्या मुद्दा है? मैडम डॉक्टर साहब जो है ना, वो तो विधायक ही हैं और मुख्यमंत्री पूर्व थे, और आगे अगर पार्टी आ जाती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राजनांदगांव का जो विकास कार्य जो हुआ है ना, डॉक्टर जी को बिल्कुल सब स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो इस हिसाब से उनका बेस तो बना हुआ है। और इनके अगेंस्ट में जैसा गिरीश देवांगन जी आ गए कांग्रेस से, है ना, हालांकि जैसा भी है उनका भी शासन सत्ता है उनका, लेकिन उनका भी ठीक है, लेकिन उनको मेहनत करना पड़ेगा मैडम। ये चुनाव भूपेश बघेल बनाम रमन सिंह है या भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी है? ये तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो बड़ा यहाँ का चुनाव माहौल समझ में नहीं आ रहा है ना। कि वैसे तो भूपेश बघेल का पर गाँव वाले लोग से सुनते हैं ना, तो जितने भी खेती किसानी वाले हैं वो लोग ज़्यादा महत्व उनको दे रहे हैं, है ना, भूपेश बघेल को। अब आगे देखो क्या रिजल्ट आता है इसका, है ना। और वैसे रमन सिंह भी अपने हिसाब से अपने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हर 3 बार। तो यहाँ की जो विशेषता ज़्यादा है, उसके ऊपर रुझान ज़्यादा जा रहा है। एक्चुअल में राजनांदगांव की किस्मत शुरू से खराब रही। अब मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी बीते हुए 5 साल में जो चुनाव हुए, तो हमारे रमन सिंह जी जो सीएम रह चुके हैं, वो भी कवर्धा जिले से विधानसभा क्षेत्र ये रहा। उस समय थी करुणा शुक्ला जी जो कांग्रेस से नेतृत्व करी थी, वो भी बाहर की थी। इस बार भी वही मौका फिर से दोहराया गया। रमन सिंह जी जो है कवर्धा से है, और अभी फिर रायपुर के एक व्यक्ति को लाके, गिरीश देवांगन जी को लाके फिर कांग्रेस ने फिर खड़े कर दी। तो हम क्षेत्रीय लोग कहाँ जाएंगे? History has shown that the road to Raipur goes through Bastar. In 2018 elections also, the clean sweep in the 12 seats of Bastar contributed to Bhupesh Baghel's landslide victory in the state assembly. In 2023, BJP is hard selling its secure, Naxal-free Chhattisgarh to woo the locals. Bhupesh Baghel on his part is promising them more tribal welfare measures and direct benefit transfers. Who will the locals really vote for will be known on 3rd of December. But what is clear is that it will be victory for all if without fear or favour, Chhattisgarh and Bastar comes out to vote. Thanks for watching.